हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग्स। तो आज मेरे साथ हैं अंतरा लहरी जी, जो कि बॉलीवुड की वन ऑफ द लीडिंग एडिटर्स हैं। इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया है वो है गजनी। बहुत लंबा आपका एक्चुअली वो है, IMDb लिस्ट में देख रहा था। गजनी, दिल्ली 6 रोड, झूठा ही सही, मेरे डैड की मारुति, बेवकूफियां, जुनूनियत, सिमरन। ये तो कुछ सिलेक्टेड फिल्में जो मैं बता रहा हूँ। बॉम्बरिया, शकुंतला देवी, अभी आपने रुद्रा भी की है अजय जी देवगन की, और आप आगे शर्मा जी की बेटी भी कर रही हैं, ताहिरा कश्यप, जो कि जी आयुष्मान की वाइफ हैं। सो जी आपका बहुत लंबा जर्नी रहा है, बहुत सारी आपने अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत कैसे हुई आपकी इस जर्नी की? सो शुरुआत एक्चुअली आई थिंक जैसे मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की में अगर जो भी पैदा हुए होते हैं उनको पता ही होगा कि आई थिंक अगर आप उन कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप बोलो कि मुझे फिल्म्स में काम करना है या कुछ हाँ, एंटरटेनमेंट में बिजनेस में जाना है, सो देयर इज ऑलवेज फेयर बिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स और अ हाँ, पेरेंट फिगर। सो सिमिलरली मेरे साथ भी था, जो कि मतलब मैंने काफी बार बोला हुआ भी कि मेरे फादर बहुत रेजिस्टेंट थे। हाँ। क्योंकि मुझे ये क्लियर था, मुझे तो पता नहीं था करना क्या एक्चुअली, हम्म। ऑनेस्टली इवन ड्यूरिंग स्कूल आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू डू कहाँ से हैं आप? इन कॉलेज। आई एम फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम कलकत्ता। कोलकाता। ओके। जी। तो मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से हुई है हम्म। एंड ऐसा है कि आई न्यू कि मुझे पढ़ाई बेस्ड ऐसा एकेडमिक ऐसा कुछ करना हम्म। नहीं है। हम्म। So that was the only thing, and then I made sure, like, I did a bit of research and I हम्म। took admission in St. Xaviers College, हम्म। Calcutta. वहाँ एक mass communication course था. हम्म। It was, I think, just the third batch. Like, I was the third batch of mass communication अच्छा। हाँ। over there. So it was very new. It was unfortunately also one of the most expensive courses at the time. अच्छा। तो हम्म। जिस वजह से और भी ज्यादा पेरेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि इतने पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट प्लेसमेंट होगी कि टू नहीं? व्हाट हम्म। एंड? हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही हो जाता है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिग problems, and why I also kind of talk about that frequently is that there are a lot of young people who kind of write in, and वो लोग हम्म। पूछते हैं कि आपके लिए तो बड़ा इजी रहा होगा कुछ, मतलब ऐसे लिखते हैं कि हाँ। आपके आप अभी जाएं उसमें, वहां से आप हमारी स्ट्रगल समझ नहीं रहे। मैं कहा भैया, आपकी स्ट्रगल मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज मेरी स्ट्रगल भी काफी थी, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ, लाइक, आई वुडंट से monetarily ऐसा स्ट्रगल था, बट आई थिंक जस्ट टू काइंड ऑफ कन्विंस पीपल दैट there is, this is a field where you can flourish. हाँ। जो कि मैं बात कर रही हूँ, समझिए लेट 90s अर्ली 2000s की, तब तक ओके। मीडिया बूम भी उतना नहीं हुआ था, हाँ। एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट डिजिटल भी देयर नहीं इज, आया था। बिल्कुल ही नहीं। तो उस टाइम ये भी नहीं आइडिया था कि कुछ फ्यूचर हो सकता है इसमें, है ना। जैसे कि बहुत सिंपली मैं एग्जांपल दूं कि जब मैं अपना कॉलेज में कोर्स कर रही थी मास कम्युनिकेशन का, माय फादर आल्सो स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग, सो ही आपके फादर लिटरली, किस फील्ड में थे? ही इज एन इंजीनियर। अच्छा, तभी। हाँ। So तभी, है ना। हाँ। तो so he one time when he had actually, he wanted me to join a job immediately हाँ। after college, and उनको honestly I think कई लोग वो समझ नहीं रहे थे कि हम लोग करते क्या हैं। तो हाँ। उन्होंने मेरे लिए, जैसे वहाँ स्टेशन जो है ना, कलकत्ता में रेलवे स्टेशन है, वहां उन्होंने देखा सीसीटीवी ऑपरेटर की हाँ। जॉब इज क्लासिफाइड एड्स में देखा, तो उन्होंने मुझे कहा तुम ये क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा हाँ। बट दैट इज दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। तो उसमें that is I think that little lack of comprehension and understanding of the industry back in those days. एक्चुअली फादर लोग देखते हैं डेजिग्नेटेड जॉब हो जिसमें सैलरी आता रहे, दैट इज अ जॉब फॉर बिल्कुल। देम। एंड ऑल्सो देखिए, मीडिया का ये भी था ना कि पता नहीं अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ये हाँ एंड था। कैसे कैसे लोग हैं। अब वो कैसे कैसे लोग तो हर इंडस्ट्री हर में रहते इंडस्ट्री हैं, में यहाँ है बस ना। निकल के आ जाता है क्योंकि थोड़ी सी मीडिया यहाँ पे ज्यादा है। पर अभी जैसे मीटू मूवमेंट में भी देखिए पता लगा कि हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। सेम सेम। हाँ। तो सो वो बातें चली देखिए बहुत बाद में रियलाइज होती हैं। अभी देयर सो मच अवेयरनेस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ऑल्सो देयर सो मच अवेयरनेस, तो आइडिया रहता है कि अच्छा कहाँ क्या हो रहा है। सो आई थिंक दैट लिटिल बिट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री वाज एक्चुअली द बिगेस्ट हर्डल इन अ सेंस, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था ऑनेस्टली। मुझे बस पता था हाँ ये तो मजेदार चीज है, कुछ मैं जो पढ़ रही हूँ इसमें बड़ा मजा आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट
नहीं तो स्कूल में कैसा था कि वो एक ऐसा ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस टाइप ऑफ होता है ना कि यू आर नॉट रियली इन्वॉल्व्ड इन द सब्जेक्ट एंड यू आर नॉट रियली अटेंडिंग. तो मैं काफी मतलब उस ज़ॉम्बी वे में मैंने स्कूल अपना कंप्लीट किया है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माय मास कम्युनिकेशन कोर्स इन सेंट जेवियर्स, व्हेन आई वेंट टू FTII, I felt connected to what I'm studying. Obviously because there was a level of interest in that. मास कम्युनिकेशन में मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स भी जो है वो फिल्म मेकिंग के ही बहुत सारे होते हैं ना. एब्सोल्युटली. देखिए जो कोर्स मैंने किया वहां एक तो फिल्म स्टडीज का एक सेक्शन था. फिल्म स्टडीज प्लस देयर वाज वीडियो प्रोडक्शन. So you were actually taking the camera and shooting things and editing them, sometimes acting in other people's films. Similarly, जब FTI में भी गई, तो it was very similar. So you will, and FTI is of course extremely film oriented, right? So there was you're shooting on film, you're editing film, you're physically handling film, जो कि आजकल जो unfortunately after a few years after I was at FTI, I think they've discontinued editing on film for sure. So I feel that was a very treasured experience to be able to handle film, celluloid, and cut film. So that's so basically that's how it started, like in a very confused manner, and then धीरे धीरे थोड़ी clarity आती गई. तो बचपन से आपको फिल्मों में इंटरेस्ट था या फिर ये था कि फिल्में करनी है पर क्या करना ये नहीं पता था? जैसे आप वेस्ट बंगाल से हैं तो सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक तो डेली डोज में बिल्कुल. आई फील मैं बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनको मूविंग इमेजेस से एक अट्रैक्शन नहीं हो. बहुत कम लोग हैं. Because the idea, it's like magic, no? When you watch, and especially that time, I am coming from a time when वो घुमाने वाले TVs होते थे ना. You didn't have remote controls and all. वो कई बार, और मैं एक चैनल, दो चैनल, खाली दो चैनल, बाद में दो चैनल आने लगे. पहले तो एक ही चैनल था. हो गया था. हाँ. और मुझे हमेशा लगता था कि इसके बाद और क्या, इसके बाद तो मैं घुमाते घुमाते वो हाथ में आ जाता था कई बार रेगुलेटर जो उसका था. तो वो टाइम से आके धीरे धीरे, like it's such an interesting thing for people of my generation. We've literally seen the evolution of television and media in our country, you know. So starting from just the Doordarshan channel, then DD Metro आया, फिर cable channels आए, फिर जी लॉन्च हुआ, जी आया, जी लॉन्च हुआ, फिर करते करते अभी देखिए कहाँ आ गए. अभी OTT के कितने चैनल्स और कितने तरह का कंटेंट बन रहा है. सो आई थिंक दैट आइडिया ऑफ मूविंग इमेजेस इज I would think most children have a fascination for it, no? So that was always there. Yeah. पर ये मासकॉम आपने जब किया तो मासकॉम के बाद FTI का आइडिया कैसे आया? मतलब उसके बाद भी आपको, जो मासकॉम में एक अच्छी चीज ये है कि उसके लिए आप, उसके बाद आपके एडवर्टाइजिंग के रास्ते खुल गए, जर्नलिज्म के रास्ते खुल गए, फिल्म के रास्ते खुल गए, सारे रास्ते खुल गए एक तरह से आपके लिए. तो फिर FTI करने की क्यों सोची? क्या होता है कि आप जब एक ऐसा स्पेशलाइज कोर्स में जाते हैं तो काफी डिस्कशंस होते हैं विद इन योर बैचमेट्स एंड विद टीचर्स. मैंने इंटर्नशिप्स भी ऐसी करी जहां मुझे थोड़े और एवेन्यूज पता लगे. मुझे ये क्लैरिटी था कि जो मुझे करना, आई डिडंट वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आई डिडंट फील, आई एम श्योर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ creative, there's a pursuit of creativity there as well, but it didn't feel right to me. I feel like the first few classes of film studies that we started studying cinema from around the world. That was very interesting to me. And it's just that thing, no, when you feel most connected. So that is, I think, the time when, again, I felt most connected when I'm studying film, or when I was putting material together. जो छोटे-छोटे student exercises shoot होते थे. So shooting those and recording those, acting in those, and then putting the material together. तो एक clarity आ गई थी कि यही करना है. And I think generally when like batchmates and all discuss कि आगे जाके क्या करेंगे, तो FTI का नाम तो आता ही है. उस टाइम FTI दो ही थे. अभी आई थिंक बहुत सारे फिल्म स्कूल्स भी खुल गए हैं. बट इन दोनों का मैच नहीं है एक्चुअली. जी, इन दोनों का जो फैकल्टी है, जो स्पेस है, जो मतलब इन्होंने एक एलुमनाई नेटवर्क बनाया, जो टीचर्स हैं इनके पास, आई थिंक उसको बीट करना अभी तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर पाया इंडिया में. I do feel, however, that it's I mean, I can speak for FTII. The space is
spectacular. हाँ. Just the feel आता है kind. वहाँ पे. Bilkul, and also the library. I've spent many hours in the FTII library, but I also feel like you can be in FTII or SRFTI and still not kind of make the best of it. Similarly, you can be at any other film school also, but you can really do well there. You can really flourish in your chosen field of work. हाँ, एक्चुअली सब आप पे भी डिपेंड करता है, कुछ आप पे भी डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप तभी बन जाओगे, कोई मैजिक नहीं हो रहा है वहाँ पे. एग्जैक्टली, आई फील काफी हद तक. और ये भी कई बार होता है, देखिए जैसे मेरे को जो अप्रोच करते हैं असिस्टेंट्स या इंटर्न्स जो होते हैं, कई बार होता है कि दे डोंट स्टार्ट ऑफ विद दैट sort of knowledge, but some of them who are really bright and who are willing to learn, they pick up really fast. Like हफ्ते भर में आप change देखोगे उनमें. So I think वो ही है कि एक right direction देना किसी को, just pushing them in the right and the direction. Will to learn तो बहुत ही ज्यादा. Will to learn is, I think that is what sustains you through. I can't speak for other industries. In this industry, I feel it sustains you through. अगर जो लंबी रेस का घोड़ा जो बोलते हैं ना, अगर आपको will to learn है, जो कि आज तक I hope मेरे में है, but that is, I would feel, key to doing well. True. So FTI की तैयारी जब आप कर रही थी, या तैयारी करी होगी MassComm के बाद, तो MassComm में तो वैसे ही प्लेसमेंट नहीं हुई आपकी, तो पापा ने डांटा नहीं कि बेटा आप एक और तुम कोर्स करने जा रही हो जिसमें प्लेसमेंट नहीं है? बिल्कुल 100%. एक्चुअली क्या हुआ था कि मास कम्युनिकेशन के बाद मैंने FTI SRFTI दोनों में अप्लाई किया था. तो आई थिंक फॉर सम रीजन. आपको ये डिसाइड कर लिया था कि एडिटर ही बनना है, या फिर आपने कुछ और भी ऑप्शंस थे? आई थिंक मैंने जैसे राजकुमार हिरानी का था कि उन्होंने डायरेक्टर में अप्लाई किया था और एडिटर में भी क्लिक कर दिया था. डायरेक्शन में नहीं हुआ, उनका एडिटर में हो गया, वो एडिटर बन गए. आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे करना था साउंड डिजाइन, साउंड इंजीनियरिंग एंड एडिटिंग. ये दो में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. अनफॉर्चुनेटली साउंड इंजीनियरिंग में उस टाइम, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल द केस, बट यू हैड टू हैव साइंस, PCM, आपका 12th स्टैंडर्ड या कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए था. जो मेरा तो फिजिक्स का एटलीस्ट बेसिकली PCM ऐसा कुछ रूल था. आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन. और मैं तो उसमें मतलब मेरा स्कोप ही नहीं था, क्योंकि वो मैंने आई थिंक 9th या 10th में बहुत बुरी तरह से, किसी तरह से मैंने पास किया, यू नो, गेटिंग थ्रू PCM. Then I took arts. I took political science, psychology, sociology. So that is the thing that I feel कि उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने एप्लीकेशन दोनों जगह दी. दोनों जगह मैं वेट लिस्टेड थी. पहली बात तो पहले आई हैड टू वेट 1 year और समथिंग, कुछ तो ऐसा हुआ था. देन आई वाज वेट लिस्टेड एंड देन दैट मींस यू हैव टू स्किप like 1 whole year. You have to wait, and then you have to apply again basically the following year. So वो जो in between year था, I tried to work in Calcutta. Then I realized that Calcutta में there was it was not at that point a very professional atmosphere. मतलब मैंने 1-2 जगह जहाँ काम किया, वहाँ पेमेंट नहीं मिली. The work hours were all over the place. So there was a complete lack of structure, honestly. So then I saw that a few of my friends had come to Bombay, and there was a scope, you know, in doing something. मैं कहा मैं 1 साल कैलकाटा में बैठना बहुत मुश्किल है. So I actually sent out, उस टाइम तो घर पे कंप्यूटर या इंटरनेट भी नहीं था, तो साइबर कैफे में जाके. ये कौन से ईयर की बात है? 2000, I would say 2002 probably. Okay. Around 2002. So ढूंढ के I went through, like applied to I don't know how many production houses. मतलब बल्क में सबको ईमेल किया, मेरा रेज्यूमे फलाना ढमकाना, कि कुछ भी जॉब दे दो. तो पता भी, मतलब एडिटिंग ये नहीं पता कि भाई होता क्या है. हाँ, बट एप्लीकेशन तो SRFTI and FTI में एडिटिंग की थी, बट obviously no one is going to give me an editor's job. So I said कुछ तो दे दो. And then I ended up, fortunately there was this very nice lady who emailed me back and said, we are doing a show in Bangla, but it's the production is in Bombay, and we are urgently looking for someone who understands Bangla to kind of, I think, write scripts or something like that. So I said, okay, great. I packed my bags and I was ready to leave, but actually my dad was very upset because he was like, you can't go to another city and it's going to be really expensive. I don't have that kind of
I can't fund you as much. कुछ भी लड़ाई झगड़ा, I said you give me 30 days. 30 days में अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है और ये वाली जो जॉब है वर्कआउट नहीं करती है, I will come back and then I will stay here. So कुछ तो ऐसे, I think he gave me some 10,000 rupees or something. Then I came in here एक suitcase. You knew anyone in Mumbai? कुछ भी जानते थे आप? I didn't. I had like a couple of known people, but ultimately with the job scenario, I didn't know anyone. It was just that one email literally that brought me here. At least you have somewhere to actually live. तो दोस्त हैं तो रहने का प्रॉब्लम नहीं, रहने का भी मैंने पेइंग गेस्ट में पीजी में रह रही थी माहिम में, एंड वो भी आई हैड टू शेयर अ रूम विद दिस गर्ल हु आई डिडंट नो एट ऑल. तो वो भी मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर से बाहर निकले. आई एम शेयरिंग दैट वन रूम, दैट वन बेड विद सम गर्ल हु आई डोंट नो. खाना अचानक घर का खाना नहीं मिल रहा है, जो भी मेरे कपड़े चोरी हो जा रहे हैं, ऑल दैट वाज हैपनिंग. But in between all of that, I did get the job. So then after that, I mean, I just stayed back in Bombay. And for 1 year. Well, I was there, yeah, for a year and a half, or I think. I then again applied to FTII. And I didn't tell my father this time that I'm applying because he was very against that. अब तो जाके job लगी, अब वो छोड़ के वापस again you want to study. So I didn't tell him that I applied again. अच्छा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो लॉजिक सही लगता है. नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड अभी जॉब लगी, अभी एग्जैक्टली. एंड वो ही हो गया ना कि मतलब ये क्या कर, क्यों पढ़ाई करनी है तुम्हें, और क्या करोगी, जॉब लग गई, बात खत्म. सो वो भी नहीं कि IIT IIM है, FTII है, वहां से प्लेसमेंट तो है. और FTII भी क्या है ना कि there was all this कि the campus में all kinds of activities हो रहा है, ये ड्रिंक कर रहे हैं, गांजा मारे वगैरह, ये सब भी बातें होती थी. और जो फिल्म लाइन के वो तो जानते भी FTII, बाकी लोग तो जानते भी नहीं FTII है क्या. बिल्कुल. So that was one of then again मैंने उनको बिना बोले I applied, and this time I got through. Then I called him and I said, now what I'll do is that you pay my ट्यूशन फी, I'll pay my monthly का जो भी खर्चा होगा वो मैं काम करके करूंगी. हाँ. So then what I was actually through first year I was working alongside, like in the weekends I used to come to Bombay. I was retaining the job that I had done, that I had signed up for. So weekends I was working. Then on the way back, जैसे बस में वॉल्वो जो है ना बॉम्बे पुणे, उसमें होमवर्क करते करते, जो भी वीकेंड होमवर्क करते करते बस में रिटर्न आती थी, लगेज लेके क्लास के अंदर घुस गई 9 बजे. So that's how it used to be. So it was an interesting sort of time. But yeah, there was, and eventually I had to quit the job because FTII also, if you're really involved, like it gets hectic by the time you're in the specialization year and all. So there was a lot of resistance, definitely. As I said, my father was still not understanding कि करना क्या है इसको. So yeah, that was at least my FTII journey was quite. तैयारी कैसे करी आपने FTII की? क्या तैयारी करी थी उसके लिए? यार, the thing is ना, मुझे समझ में नहीं आता है तैयारी होती क्या है. Honestly, even ICSE, ISC भी जब मैंने दिया, I saw everyone around me, preparing वो टेस्ट, क्या सैंपल टेस्ट वगैरह जो होते हैं FTII के वो पेपर्स लेके. हाँ. So here also I saw कि अच्छा सैंपल पेपर्स होते हैं, उसमें ये पूछते हैं, but then and then वो मनोरमा ईयर बुक होती है, उसमें उसका रट्टा, मेरे से रट्टा मारा नहीं जाता है. तो मैंने कहा अच्छा जितना होगा मैं कर दूंगी. And fortunately, most of the paper, what had happened also was Xaviers का जो entrance paper था, काफी similar lines पे था. So there are certain questions that they asked which were very similar. So I understood कि ठीक है, कुछ क्या होगा कि some current affairs मुझे पता नहीं होगा, तो ठीक है, कोई नहीं पता होगा. बाकी आर्टिकल्स होंगे, एसेज होंगे. ऐसे जैसे you write about, you see a photograph, you're shown a photograph or you're shown a painting and you have to write about it. So it's creativity based, most of it. So I didn't prepare. मतलब I didn't have the subconscious level of preparation हो गई थी because you were in the same field, MassComm. In a sense, yes. तो किस ईयर में पास आउट हुए आप फिर FTII से? 2007 के एंड में. कितने साल का कोर्स था? It was a 3-year course. 3 years. But 2004 में आप गए अंदर. हाँ, मतलब हम लोग का क्या होता था कि
एक्चुअली एफटीआई में ये भी हो जाता है, जो कि एसआरएफटीआई में भी होता है कि कई बार आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाता है। कुछ ऐसा, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी तो कोर्स एक्सटेंड हो, तो हम लोग का शायद 3.5 साल में जाके खत्म हुआ था। But a lot of us who had completed our diploma films, we had already started moving to Bombay. Yeah. So वहाँ पे connections already build up हो जाते होंगे alumni की वजह से? Not really, not really. I have also not, to be honest, I am not someone who interacts a lot with anyone. Introvert थे आप थोड़े? हाँ, मतलब I think ambivert बोलते हैं, जो कि were kind of like introvert and extrovert. But हाँ, तो but वही हो जाता है कि I didn't really सीनियर्स से भी इतना ज्यादा कांटेक्ट में, एक दो जन थे जिनसे जो वर्कशॉप लेने आए थे मेरे सीनियर्स, उनसे कांटेक्ट था. So that was pretty much it. And I think the first job also over here, I can't even remember how I got the job, but through someone, I can't even remember how I got that first job. But वही है, किसी के through ही आया था. क्या था, क्या जॉब पहला वहां से निकलने के बाद? So I took an in-house job because again I didn't have money. And I couldn't ask for more money. So I took an in-house job, which was a documentary production house. वो भी नए थे, नया production house था, and they hired me for like on a per month payment के हिसाब से. तो मेरा main as an intern, as I think like an assistant, no, like an assistant. Like the editor, but there was nothing to edit because मतलब कुछ शूट ही नहीं हुआ था, तो कुछ edit करने को था नहीं, but technically as an editor. So I was there for 6 months. And that time, at least the big thing for me was I was able to pay my rent. At least पैर रखने की जगह हो गई मुंबई में. बिल्कुल. और मेरी through some of my one batchmate of mine, I met my roommate. I was very clear I didn't want to stay with any FTII people. Because I feel वो एक vibe कुछ create हो जाती है, वो struggler वाली vibe जो है, और and I didn't want that vibe. So I ended up staying with a friend, with a girl who was an advocate. And I think that was one of the best things I could have done, honestly, because हम लोग she would tell you so many things about laws, cases and all this. She would tell me about her work. I would tell her about my work. और दोनों दुनिया इतनी अलग थी. I feel like sometimes we need that because film industry में भी ऐसा cocoon बन जाता है ना. So in fact she's still one of my closest friends. We don't live together anymore. She got married and all that, but she's still one of my closest friends. So that was very good. I think I started staying with her, and then I was working in-house in this production house. फिर वो छोड़ा क्यों आपने production house? I think उन्होंने छोड़ने को बोला because there really wasn't too much work happening. Coincidentally, at the same time, I got the offer to assist on Ghajini. अच्छा, सीधे गजनी. तो उसमें कौन एडिटर थे उस टाइम पे? उसमें एक बहुत, मतलब इतना बहुत फेमस एक साउथ के एडिटर है, एंथनी बोल के, और उनका मैंने कोइंसिडेंटली एफटीआई में बहुत उनका काम देखा था. एंड आई वाज अ मैसिव फैन ऑफ हिज वर्क. हाउएवर ही वाज एडिटिंग फ्रॉम चेन्नई, तो मेरा एक्चुअली उनके साथ डायरेक्टली कुछ कांटेक्ट नहीं था. जो यहाँ जो उनके एसोसिएट एडिटर थे निशांत, उन्होंने मुझे हायर किया था. अच्छा. सो लाइनअप कराने के लिए. लाइनअप भी एक्चुअली काफी हद तक फिल्म हो गई थी. लास्ट 6 महीने का काम था. उस टाइम ज्यादा जैसे साउंड डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट्स देने का, डीआई में एक्सपोर्ट्स देने का, दैट वाज द जॉब. तो उस टाइम ऐसा लगा कि ओके दिस इज माय मोमेंट, आमिर खान की फिल्म कर रही हूं मैं, ऐसा कुछ लगा? बिल्कुल ही नहीं. एक्चुअली सोचने का टाइम नहीं मिला, एंड देयर वाज सो मच वर्क. आई वाज एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड, एंड इट वाज आल्सो द टाइम आई रियलाइज्ड दैट आई डोंट नो इनफ. मुझे जब पहली बार यशराज की फिल्म मिली थी असेस करने के लिए, मैं रात भर सो ही नहीं पाया था. मैंने कहा ओके आई हैव अराइव्ड इन द सिटी, अब मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया हूँ. फीलिंग आती ना. पर मुझे एक्चुअली कभी आई, ऑनेस्टली वो वाली फीलिंग नहीं आई, बिकॉज I was constantly एक वो imposter syndrome होता है ना, कि will I be able to do it, will I be able to manage, so that kind of was very overwhelming for me. And जो कि editing में, क्योंकि काफी कुछ I realized technically
as film students you are not aware of professional workflows. जितना भी तुम प्रैक्टिस कर लो, जितना भी मशीन पे टाइम स्पेंड कर लो, एकदम ही चेंज होती है, एकदम ही अलग है, एकदम अलग। और जो ये आज तक होता है कि हर प्रोजेक्ट पे अलग प्रॉब्लम आती है, तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही आप थोड़ा यू कैन डील विद इट in a calm manner. So at that point I was too overwhelmed with this overload of knowledge that was happening. And जैसे रात नहीं सोना, कितने मतलब ऑलमोस्ट 2-3 दिन घर नहीं जाना, वही काम कर रही हो, कभी वही बैठो। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो सबटाइटल वाले एक जेंटलमैन थे, तो वो आते थे, मैं ऐसे चेयर पे ही सो गई, उनके साथ सबटाइटलिंग करते करते चेयर पे सो गया, so exhausted. But I think it was a brilliant experience. Just the learning of it was phenomenal. So reel पे शूट हुई थी गजनी पूरी? जी, actually till Shitizsays, pretty much everything was being shot on film. Shitizsays and road movie as well, which I worked on. उसमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लर्निंग हुई थी, बिकॉज रोड मूवी पे जो एडिटर थे वो अमेरिका में थे, जो साउंड डिजाइनर थे वो इटली में थे, जो डीओपी थे वो फ्रांस में थे। अच्छा। एंड मैं इधर थी। तो एंड द डीआई लैब, द कलर लैब वाज इन टोरंटो। हे भगवान। तो इट वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, और उस टाइम इतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। So you have to coordinate with all of them. Yes, and send exports to each of them. So that was and also we were cutting on film, like we were like telecine वगैरह जो होता था उस time. I was actually able to go to the telecine lab and see what was happening there. What is happening. तो edge codes देखना, मैच करना, एक बार टेलीसिने होके आ रहे तो मैच करना कि वो edge codes मैच हो रहे हैं कि नहीं. All of that was again such a massive learning experience. तो last I think film that I worked on was Shitizsays, which was shot on film. उसके बाद से pretty much everything became like people started shooting on digital. So कुछ problem हुई आपको रील से डिजिटल में शिफ्ट होने में? Initially हुई, because I think the software was also still kind of adapting to these digitized क्योंकि हाँ वो सब perfect नहीं था उस time. Yeah, that was also evolving. Plus suddenly you had to deal with very heavy footage. तो जो machines भी थे, they were unable to deal with because जब टेलीसिने होके आता था, they were actually DVPAL जो में आता था हमारे पास मटेरियल, तो बहुत ही लो मतलब बहुत compressed footage होता था. So the machine was easily able to deal with it. अब क्या है कि soon as we started, the first film which I did independently, Gattu, that was shot on 5D. And MOV footage बना रहा है. MOV, and you had to figure suddenly codecs, compression, ये सब क्या है कि पहले फुटेज आ रहा है, एक रात तो आपका कंप्रेशन में जा रहा है, कंप्रेस कर रहे हो उसको. हाँ नहीं, क्या व्हाट इज दिस कंप्रेशन, व्हाट इज दिस कोडेक, कभी 24-25 की गड़बड़ हो रही है. वो 23.976 का तो बहुत इशू होता था एडिटर्स के साथ, साउंड मैच करना, वो सब करना. बिल्कुल. ऑल्सो क्या होता था कि कई बार कैमरास जो हैं, पीपल आल्सो स्टिल फिगरिंग आउट कि कैमरा में 25 में शूट करना है कि 24 में शूट करना है. Then और लेड का फुटेज जो था वो रॉ बनाता था, तो आरजीबी फाइल से अलग बना देता था, वो बहुत हेवी होते थे. वो एग्जैक्टली. तो ये सब करते करते आई थिंक दैट बिकेम अनदर फाइट. एंड क्या हुआ कि डायरेक्टर्स को जब देखा कि अब नाउ वी डोंट हैव टू बी केयरफुल अबाउट हम कितना शूट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स भी ज्यादा शूट करने लगे. सिंस देन जैसे गजनी कट्टू का शूट हुआ होगा, रील होता कोई भी एक्चुअली देखिए, कोई भी फिल्म उस टाइम की जब वो स्टॉक पे शूट होता था, इट वाज सो एक्सपेंसिव दैट यू कुडंट अफोर्ड टू. हाँ, सो यू कुडंट अफोर्ड टू ओवरशूट. So you rehearse and you shoot. Yeah, and now with digital what happens is that वो कार्ड्स पे रिकॉर्ड हो रहे हैं. तो वो तो कितने भी कार्ड करके हार्ड डिस्क पे ट्रांसफर कर दिया, फिर वो कार्ड खाली हो गया, फिर आप उस पे रीयूज कर लो. सो वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट मोर फुटेज एज वेल. 2-3 कैमरा साथ में चल रहे हैं. क्योंकि मैंने देखा है बहुत जो अच्छे एडिटर्स हैं, आप उनको कितना भी ओके टेक दे दो, लिस्ट बना दे दो, वो एनजी टेक्स एक बार देखेंगे जरूर. बिल्कुल 100%. वो मैं आज तक बोलती हूँ, बल्कि बिकॉज आई डोंट फील लाइक देयर इज एनीथिंग कॉल्ड एन ओके टेक. It can even be, maybe it's just technically okay, but your NG takes, sometimes you're the real
film is there, and the good performances a lot of times are missed because they're in the NG takes. So 100% ये तो मतलब मैं खुद कभी continuity sheet देखती नहीं हूँ कि okay NG क्या है. ये मैंने भी देखा है कि कई एडिटर्स को मैंने जैसे कंटिन्यू शीट देता था, वो रखे रहते थे, कभी खुलती ही नहीं थी, वो पूरा का पूरा उठा के टाइमलाइन पे डाल देते थे. They would watch everything. बिल्कुल. So normally कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हैं आप? तो अभी till the last maybe 3 years or so I was using FCP 7. फिर वो obsolete हो गया. So then I had to go back to Avid. मैंने last Avid use किया था I think Ghajini के दौरान. And FTII में थोड़ा बहुत Avid सीखा था. So I had to kind of learn Avid all over again. And FTII में Avid उस टाइम सिखाया था 2004 में. हाँ बहुत मतलब basic हमने सीखा था. So now I'm working on Avid and Premiere Pro. So जो project पे I just leave it up to my associate editor कि उसको कौन सा comfortable है. तो मैं दोनों पे काम कर लेती हूँ. FCP 10 not for film, not for the kind of like long format that we are doing. I don't think mostly ads एडिटर लोग माउस टच ही नहीं होता करते हैं, कीबोर्ड ही उनको यूज करते रहते हैं. और FCP 10 and also FCP 10 some people have found a way around it. I personally have not. जो कि आप जब OMF EDL वगैरह देते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई है in sending out these exports. So it has not really worked for me at all. FCP 10 in particular. And DaVinci, have you tried it? DaVinci also I didn't find an ease of editing. देखिए Avid में and even to an extent Premiere Pro में जो bin system है ना, it's very similar to जैसे हम Steamback पे जब edit करते थे तो bins का वहां भी bin होता था. And sorting करके तो एक जो workflow की आदत है, I didn't find that ease of workflow in Resolve for editing. So I would only like right now I only literally use Resolve for transcoding. If I have to transcode something quickly, then I use Resolve for that, but I don't use it for editing. अच्छा ये बताइए कि ये टाइम कोड नाम की एक चीज होती है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है. मुझे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे मैसेज में लगते हैं टाइम कोड क्या होता है सर, TCR क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए जरा. I mean time code very simply these are unique identifiers of every frame. जैसे हमारे नाम होते हैं, मेरा नाम अंतरा है, किसी और का नाम कुछ किया, तो हर एक इसी तरह हर एक फ्रेम का एक नाम होता है. So that is time code. So if I want to say कि मुझे ये point पे in point डालना है, it is a frame which is unique. In the whole film वैसा कोई frame नहीं है. So that is the identifier. तो 24 FPS के फुटेज में 24 जो FPS होगा उसमें 24 टाइम कोड्स होंगे बेसिकली. एक सेकंड 24 फ्रेम्स के बाद 1 सेकंड काउंट होता है. और जो 25 का टाइम कोड होता है वो 25 फ्रेम्स के बाद 1 सेकंड काउंट होता है. ओके चलिए बढ़िया. और तो अभी जो लोग एडिटर बनना चाहते हैं, जो मुंबई में नहीं है या जो फिल्म स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, कौन सा सॉफ्टवेयर आप उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो सीख के आए सो दैट दे कैन एटलीस्ट गेट एन इंटर्न जॉब और समथिंग लाइक दैट? मैं ऑनेस्टली आई फील सॉफ्टवेयर पे इतना एम्फोसिस नहीं होना चाहिए. सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड. इट्स लाइक आप कोई पेंटिंग बनाने के लिए कौन सा ब्रश यूज करेंगे, आपको पेंटिंग बनाने से मतलब है. या कौन सा पेन यूज करेंगे आप अपनी बुक लिखने को. सो दैट इज हाउ वन शुड लुक एट इट. एज सच यू कैन. And also the approach should be that, let's say, even if you know, say, Premiere Pro, and you don't know Avid, it literally takes 10 days just to learn or to learn. And वो काम करते करते आ जाता है. But हाँ, largely, अगर if someone has to pin me down and say कि कौन सा software, I would say Premiere Pro or Avid are yes. अच्छा तो क्या एडिटिंग सीखने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मतलब कि फिल्में किस तरह से देखें? लाइक फिल्में तो हर कोई देखता है, बट व्हाट इज द अप्रोच दैट यू शुड वॉच from the mindset of an editor? I have a lot of trouble because with this particular thing, because I know sometimes when I went for workshops and stuff, people would want to analyze a film and see कि उसकी editing कैसी थी. मैंने बल्कि workshops में जाना ही बंद कर दिया इस वजह से, because I find it completely pointless. क्योंकि मुझे like when I'm working on a film, only I know what my rushes are like. So it's not possible for me to predict
by watching a film that editor ने ये सोच के ये ऐसा किया, unless you have read an interview of the editor where they have said something in particular. क्योंकि देखिए फिल्म भी collaborative होता है. It's not like कि editor ने single handedly independently सोच लिया मैं ऐसे करूंगी and they did it. एक तरह से लिखी जाती है, एक तरह से शूट हो जाती है, एक तरह से डायरेक्ट की जाती है, तब जाके आपके पास मटेरियल आता है. So what you are getting is a sum total of all these things, and all of these things are informing the way you edit. So until you watch the rushes, for me, I don't think I can analyze a film and say कि ये सोच के इन्होंने ऐसे एडिट किया होगा. नहीं भैया, कई बार ऐसा भी हो सकता है उनके पास और शॉट ही नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसे एडिट किया. कई बार लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने वो शॉट क्यों लगा दिया, पर क्या पता कुछ और शॉट था ही नहीं, उन्होंने एनजी शॉट लगा दिया. एग्जैक्टली जैसे जंप कट्स भी अगर यूज हो रहे हैं, कई बार ऐसा हो कि तुक्के में अब बस यूज हो गए एंड इट वर्कड फॉर द पर्पस ऑफ द फिल्म, because this is something that happens to us on a daily basis, that the language of your film is also evolving based on the material that you have received. So I think it's again each to himself or herself. If you feel you can watch and explain, I personally can't. I don't understand this way of learning editing. I feel editing is something, it's like singing or playing, like using an instrument. The more you do it, the more you'll get better with it. So I feel if you want to edit, you don't want to go to a film school, that's great. You need to just double down and start working. So do an internship for at least 1 month, because you have to understand professional workflows. You have to understand the speed at which we are working, क्योंकि आज के डेट में with OTT schedules are very very important. True. So as an intern कोई आपको अप्लाई करना चाहता हूँ आपके अंडर में काम करने के लिए, तो क्या क्वालिटीज देखती हैं एक इंटर्न के अंदर, एक लड़के के अंदर जिसको कुछ नहीं आता, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? टेक्निकल तो अपनी जगह है. As I said, I think that person has to be willing to learn and willing to work hard, because आजकल मुझे जो ज्यादा दिख रहा है कि lot of people come in thinking I already know everything. और YouTube क्या है कि tutorial. and क्या है ना, किसी को भी there's no universal truth. Firstly, in any kind of art, there's no universal truth. So even the greatest filmmaker of all times or whatever, it's his truth or his version of the truth. True. And you may subscribe to his version of the truth, but it's not necessarily the universal truth. So there is no one way of doing something. And जो कई बार होते हैं जो interns या assistants आते हैं, a lot of them are very hell bent on doing something in the way that only they know. Which is it doesn't work for me at all. They're not willing to learn. There can be an alternate method of doing the same thing in a much better way. Absolutely. So that is one big problem, I feel. Also, as you said, जैसे YouTube देख के tutorials देख के आजकल काफी सीख लेते हैं. But then you have to unlearn also. True, जैसा आपने बताया कि गजनी के जब आप सेट पे गई तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको पता ही नहीं थी FTII में 3 साल पढ़ने के बाद. नई चीजें पता चली. अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है. बिल्कुल. So and I feel एक और क्या होता है कि कई assistants ने जैसे मेरे से पूछा है, when I'm talking to them about a project, they're like star कौन है? तो star से क्या लेना देना है? हमारे काम का star से कुछ मतलब I'm not going to be interacting with them and all. So जो मतलब अगर star struck हैं and आपको acting से या actors से लगाव है, editing is not the right space for you. हाँ, कई लोग रास्ता देखते हैं ना कि एडिटिंग में घुस जाऊंगा, इसके थ्रू मैं आमिर खान से इससे बात कर लूंगा, उसके बाद उसमें घुस जाऊंगा, डायरेक्शन में घुस जाऊंगा. बिल्कुल. So that is not, I mean, I feel it's a waste of my time and that person's time if that is how they're approaching the job. उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा बेसिकली. उनको अगर लगता है कि आप तो ऑलरेडी प्रोफेशन में हुई, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे इफ दे स्टक. हाँ, एब्सोल्युटली. नहीं, ऑल्सो देखिए क्या होता है कि अगर कोई मेरे साथ काम करे, किसी भी एडिटर के साथ काम करे, देयर इज अ प्रोसेस वेयर वी आर ऑल्सो टीचिंग देम certain things, tricks of trade. Yeah, so if you are not in it for the right reasons, then it's a waste of my time also in that sense. Then I would have rather teach someone else who is willing to absorb that those instructions and help you in the future projects. Exactly. तो ये आपने गजनी करी, फिर उसके बाद क्या कौन सी फिल्में आई आपके रास्ते में? So I was assisting on Ghajini. उसके बाद
क्या फिल्म, आई थिंक रोड मूवी ही शुरू हो गई थी। मैंने दिल्ली 6 पे शायद दिल्ली 1 6 महीने में के लिए अराउंड काम किया था फॉर अबाउट अ मंथ, बट देन क्या हो गया था कि आई वाज वर्किंग ऑन दिल्ली 6, आई वाज वर्किंग ऑन गजनी एंड आई वाज वर्किंग ऑन रोड मूवी तो ये सब ऑल तो एट द एकदम सेम टाइम। टॉप की फिल्म है कमर्शियल की। ये इसके जी लिंक्स कैसे मिले आपको? एक्चुअली आप क्या है ना कि एक बार आप काम शुरू करो तो फिर वो एवरीवन गेट्स टू रोलिंग नो यू। में हो हाँ। जाता है या सो दैट इन दैट सेंस वंस यू स्टार्ट वर्क एंड यू आर इन सर्कुलेशन देन यू विल इवेंचुअली यू नो गेट वर्क। So then road movie पे I had assisted that, went on for a while. उसके बाद जुटाई सही में one of my seniors, he had asked me to assist him. So I was on that for another like 1.5 years or so. उसके बाद फिर गट्टू बोल के एक फिल्म थी जो मेरे एक सीनियर ने मेरे को पास ऑन करी। So that was my first independent film, so to speak. जी गट्टू में कौन था? गट्टू में कोई भी ऐसा आइडेंटिफाइबल कोई नहीं था। It was a very small ऐसा independent film. But Gattu was released in 2011. Yeah. So it just took you 3 years to become independent editor. That's great, actually. I feel, see, even now, actually, a lot of times people get out of the institute and they get the independent project immediately. So it really, it's a mix of being at the right place at the right time and a lot of other factors. So that was, but I feel there was a lot of learning that went in before I got my independent project. So I was very clear that I wanted to assist before doing anything independent. Kai log they want to kind of get Directly into independent projects directly. Yeah. So I wasn't sure that I would be able to do it. So then Gattu hua, uske baad actually there was a substantial amount of time before I got my second film. And uske baad fir it was a film called From Sydney with Love. Okay. That also I got from another FTII senior. Uske baad then pretty much you know, when I started getting work at shorter intervals. I think between that first and second film was the longest break. उसके बाद लगातार मिलता रहा काम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी डायरेक्टर का काम देखते हैं और वो काम जो होता है वो बहुत खराब होता है एंड यू आर लाइक अरे यार मैं इसको कैसे एडिट करूंगा। पर कभी कभी कोई ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा होता है एंड यू फील वेरी गुड कि अच्छा यार मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं उनके बारे में तो नहीं पूछूंगा जिनका खराब काम था, बट कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स इसमें आपने काम किया एंड यू सॉ द रशेस एंड यू सॉ कि अरे यार मजा आ गया रशेस देखकर ही? I can't remember also, but I feel maybe you can tell me about हाँ मतलब मैं कोई फिल्म जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो काम करने में? Actually pretty much सारी फिल्मों में I have not really had a very bad experience on any particular film. I would say हाल ही में एक project है जो कि मैं अभी I can't talk too much about it, but there's a project which will come out hopefully in the next couple of months. And I think it's one of those things where you see the rushes and you know that it works. Okay. Yeah, which is kind of rare. So that's a project that I'm looking forward to. इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा रुद्रा का? रुद्रा का भी काफी इंटरेस्टिंग था, काफी हेक्टिक था। चीजें रही होंगी उसमें। I mean technical actually हर प्रोजेक्ट में ही रहता है in some capacity or the other, but I think it was very challenging because there was a very short turnaround time between the shoot and the edit lock. Usually we get a fair bit of time. इसमें जो particular format था उसमें इतना time नहीं था. So from that perspective it was very मतलब challenging भी था, hectic भी था and interesting भी था उस वजह से, क्योंकि ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। एक फिल्म में कितना टाइम लगता है आपको एडिट करने में, मतलब टोटल रशेस आने के बाद? हाँ, फीचर फिल्म में यूजुअली 3 से 4 महीने तो जाते ही हैं फाइनल एडिट होने में। हाँ, अब क्या है कि थिएट्रिकल्स में यूजुअली द रिलीज डेट एंड एवरीथिंग इज अ लॉट मोर फ्लूइड. With OTT, everything is kind of set in stone. Like you'll get a post-production schedule. Soon as the shoot starts, you will also get a post-production schedule. And these are deadlines that you have to meet. Otherwise, there are, matlab, ek snowball hoke, there are massive repercussions for the production house if they don't deliver on time. So, with OTT, actually, there's generally, it's a lot more hectic. हाँ, क्योंकि वो अनाउंसमेंट पहले ही कर देते हैं, पोस्टर बनाने के टाइम ही अनाउंसमेंट कर देते हैं। हाँ, and also every platform sort of has a calendar
that day कि ये महीने में ये release होगा फलाना ढिमकाना ऐसे करके. And also because there are so many platforms and there's so much competition now, they need to have that flagship series or a flagship original that's coming out and they can announce. So that because of that competition, it's become a lot more hectic. In a way, it's good because you have to be very decisive. Even as a director or an editor, you have to be really decisive because you have to meet these deadlines now. So in that sense, it's really interesting. So is your father happy now about your progress? I think so. I think yeah, finally in the last, I think 3 years or so, he felt that ठीक है, लगता है कुछ career है. So अच्छा, आपके फेवरेट एडिटर्स कौन हैं? एंथनी, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी पहले, श्रीकर प्रसाद for sure. I think these two for me are. श्रीकर सर का नाम मैंने काफी सुना है. He's one of the most famous editors here. He's fabulous. He had come for a workshop at FTII as well. And he's also, along with being such an amazing editor, he's an amazing human being as well. I think that is very rare. क्या uniqueness लगती है आपको उनके editing की? Have you worked with him? No, I haven't worked with him. I didn't get the chance because I think one time we tried to, and then I was already doing something else. I've never worked with him, but I feel just in terms of there's a directness, like, you know, how he is as a human being. There's a directness and an honesty which is within him, and that reflects in his work as well. And that's something which I find it's so pure. Like everything about the way he is cutting and the cut points and all, everything is very pure. Also the way when he came to teach us, also the way he explains things is very interesting. Like you just get a whole new perspective on how to approach material. अच्छा, what are the films that you think that film students should watch? मतलब ऐसी कुछ 3-4 फिल्में जो आपको लगता है बहुत well edited हैं, for any editing student it is must for them to watch. अगर ऐसा कुछ है तो I don't think so actually. मतलब मुझे I feel you watch whatever you want to watch. There's something to learn even from a bad film. हाँ, ये editing कैसे नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है. Also I feel like एक तो पहली बात तो I don't like to diss any film because I'll only diss a film if I feel I could have made it better, which is not the case. I don't feel I have that kind of confidence yet. But I feel like any film which popularly has not done well, also you can watch that and learn a lot what didn't work. And I feel you learn a lot more from those films possibly than you do from, of course you learn from a successful film also what works for the audience, what is working or what is not working. But it's important to kind of analyze both kinds of films, I feel. But I think overall, if I have to, I mean, my favorites are honestly like Satyajit Ray is someone whose work I have watched through and through, you know, my mass communication course, through the FTII course, till today. There is an instant connect when you're watching his film. There's this sort of humanity to all his characters. So that is, you know, and also what happens with these kind of films is that it takes you into a whole world, different world. So that world building is something that is also coming in, of course, because of the writing and casting and performances and all, but also the editing kind of pulls you into that world. So I think that for me is, I would always recommend watching Satyajit Ray's work. But I think again, it's like different things. Depends on the person. कहाँ से किसको inspiration मिलती है. Absolutely. तो favorite film कौन सी है आपकी, रे साहब की? बहुत सारी है, बहुत सारी. I think मतलब कौन सी बोलूं और कौन सी नहीं बोलूं. Of course, मतलब जो obvious सा है, जैसे चारुलता, पाथिर पंचली, all of them, हाँ. Then अभी हाल ही में rewatched one of his films called Auronnir Din Ratri.
that also, there's so many layers to his films that I've watched these films, but every time when I'm watching them again, you learn you something see new. something different. So I think lately, because हाल ही में मैंने ऑर्डिनरी दिन रात्रि देखी, तो I'll probably say that is my favorite. वो देखिए But आपने I love टू बॉयज शॉर्ट फिल्म? नहीं, टू बॉयज नहीं वो आप देखी देखना, है। वो शायद इस पे रेयर फिल्म है, ऑस्कर के उसमें वेबसाइट पे पड़ी है, यूट्यूब पे मैंने देखी थी। मैंने कहा यार कोई आदमी इतनी सिंपल चीज को, सिंपल स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से शूट कर सकता है, मतलब इम्पॉसिबल लगता है। बिल्कुल, जो कि उनका एक्चुअली हॉलमार्क ऑफ हिज वर्क इज दैट बेसिकली द फिल्म्स आर सिंपल, ही शूट्स देम सिंपली इन दैट होल, जो कि पौतिर पांचाली से, बिल्कुल। एंड जो एक तरीका है, देखिए शूट करने का भी, जो कि न्यू रियलिस्ट तरीके से वो जो शूट करते थे, that is something that I don't find. Like right now we pump in so much money, we do all kinds of things, shoot abroad, shoot here, shoot there, but ultimately the storytelling in Ray's work, what really appeals to me is that with bare minimum, and he would shoot in like Orane Din Ratri, for instance, shot in some little small part of Bengal, but the storytelling is on point. True. You can't fault anything in that. He didn't have fancy budget, he didn't have fancy cameras, but yeah, he had that content actually. Yeah, exactly. So big lesson for us there. तो भविष्य में अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है आपके लिए? डायरेक्शन? I don't know really. I don't know. I think again it's one of those things that I've not really planned anything. So you are satisfied and content with whatever you are having, the editor ही for the moment. For the moment, you never know. I may not even want to be in the business anymore. It's one of those things that there's nothing that I've planned. So you're not too much of a planner. You just. I'm not a planner at all. I'm not a planner at all. मुझे समझ में नहीं आता क्या plan करूँ. So. But do you think that film editing is a great career for people who are looking to become film editor? Because there's so much competition, so many films, and is it a good career? Because is there a good pay for everyone? I mean, I think it's very relative. It depends on your temperament for one, because it's very, it can get tedious. Increasingly long hours. Nowadays, you get feedback from everyone, from producer, director. Everyone is constantly giving feedback. So you have to have that kind of temperament. But is the money good? It's, I wouldn't say it's as good as. मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, कि एक बहुत टॉप के एडिटर हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका. So I called him for an interview, ठीक है. So he asked me to come and meet him. So मैं गया अंधेरी उनसे मिलने के लिए. तो मैं अंधेरी मिलने गया उनसे, और so he was also running a real estate shop. So मैंने कहा कि सर आप रियल एस्टेट में बैठे हैं, तो कहते हैं कि आप दूसरे कमरे में चलते हैं. दूसरे कमरे में ले गया. He said कि क्षितिज, I did a biggest blockbuster of Bollywood and I got paid for this. And for 6 months I have to have an AC कमरा जहाँ पे मेरे एडिटर्स बैठते हैं. आप ऑनलाइन एडिटिंग, ऑफलाइन एडिटिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है. 6 महीने में आधा पैसा तो मेरा रूम में चला जाता है जो जुहू में है, एडिटर्स के पास चला जाता है. एसी का रेंट और कंप्यूटर्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है. तो कह रहा मेरे पास कोई बचता ही नहीं है. कहने को तो इतना पैसा आ रहा है मेरे पास, पर अगर आप देखोगे 6 महीने का जो फिल्म का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लगातार फुटेज भेजते रहते हैं, मुझे एडिट करना पड़ता है, तो आई एम नॉट गेटिंग दैट मच मनी. तो मेरे पास बच कुछ नहीं रहा है. बिल्कुल. So I think definitely one, again it depends on what everyone's definition of good pay is. Very different depending on their economic situation at the moment. But in proportion to the budgets that are assigned to actors, for instance, we get 60 crores, 100 crores. Fraction. We get a fraction of it, like the smallest fraction of it. And it's not like our work is any less. There is a lot. It's physically and mentally tiring, challenging actually, as a job. Also, you are kind of putting together performances. You're putting together the film, because I always say that without editing, फिल्म कौन देखेगा? तुम्हारे रशेस तो कोई देखने नहीं आ रहे हैं. इसलिए शादी में आप लड़की को घर से जाके बैठा दो, दैट इज योर रशेस. पर अगर आप उसे ब्राइडल उसमें मेकअप सूट में लेके ले जाओगे, वहां पे वो खूबसूरत होती है. तो एडिटिंग टेबल इज द प्लेस वेयर यू मेक द फिल्म ब्यूटीफुल. बिल्कुल. नो, ब्यूटीफुल भी है, एंड मतलब एक कोहेसिव एक स्टोरी टेलिंग जो है, वो तो एडिट करके ही आएगी, वो तो रशेस में नहीं रहेगी. आई थिंक प्रोड्यूसर्स को भी समझ में नहीं आता. वो कहते हैं इनको किस बात का पैसा देना है, ये लोग क्या कर रहे हैं. I feel समझ में सबको आता है. Everyone always acknowledges that there is how important editing is. But I think people also are a little bit in denial because at the moment it's not convenient
to pay editors a certain amount of money, because that also means acknowledging that they have a massive contribution in filmmaking. I think it's convenient for a lot of people to not sort of highlight the editor's contribution, because it takes away the power of people, of certain people who think they are key in making the film. It takes away power from them if they acknowledge other people. So that's one of the reasons I feel that I also think that technology is also behind it. मतलब अभी जो iMac और इन सब में जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिए, मुझे याद है शुरुआत में एसिमुलेट का सेटअप ही 40 लाख का आता था, जिस पे एडिट होता था, वो सब होते थे, और आज इतना इजी है कि 50,000 के एडिटिंग सेटअप पे आप पूरी फिल्म एडिट कर सकते हो. एवरीवन थिंक्स जस्ट बाय लुकिंग एट अ ट्यूटोरियल दैट दे कैन बिकम एन एडिटर, बट एडिटिंग इज, आप एक फ्रेम भी एक्स्ट्रा कर दोगे, फिल्म आपकी बोरिंग हो सकती है. बट यू नो, स्ट्रेंजली मोस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड दैट. Which is why they want to hire. They understand that completely. That's why I'm saying that ये ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है. That is why Chandan Vola is still relevant. बिल्कुल. And which is why, but I feel the minute you acknowledge that it's a collaborative art, which it is, it's a collaborative medium, but if you acknowledge it, it takes power away from certain people. So if you don't want that power to go, it's easier to not acknowledge the importance of other departments. और सिर्फ एडिटिंग क्यों, साउंड डिजाइन ही ले लीजिए. साउंड डिजाइन तो और नीचे है. बिल्कुल. एंड साउंड डिजाइन, द थिंग इज क्या है कि अभी खाली चिड़िया डाल दी, थोड़ा ट्रैफिक का साउंड डाल दिया, उसको साउंड डिजाइन बोल के पास किया जाता है कई जगह. एंड देयर इज मच मोर टू इट. एंड साउंड, म्यूजिक, इट कैन वर्क एट सच अ subliminal level, and it really aids the edit of the film. Like you can have a great edit, but if you don't have great BGM or great sound, your film will actually sink. Actually, great editing और great sound का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो आयरनी ये है कि अगर वो नोटिस हो गया तो वो ग्रेट नहीं है. तो आपने बोला सब्लिमिनल है कि आपका एडिटिंग इतना फ्लॉलेस होना चाहिए कि वो नोटिस में ना आए, बट बिकॉज ऑफ दैट वो मेरे ख्याल से वो जो क्रेडिट है ना, वो नहीं मिलता मेरे ख्याल से साउंड डिजाइन और एडिटिंग. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इनविजिबल आर्ट है, इनविजिबल आर्ट ऑफ एडिटिंग, बट इनविजिबल होते होते एडिटर्स ही इनविजिबल हो गए. Because it's so invisible, so no one knows exactly what you are doing. Even a lot of times directors and producers don't know what you have done to improve a film. Editing is magic. मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैंने कुछ तो शॉट ले लिए थे अंडरकवन से, उसमें तो मैं चला गया घर, ठीक है, डायरेक्टर होने के बाद. तो एडिटर साहब थे, वो बहुत अच्छे बड़े एडिटर थे, उन्होंने कुछ तो आगे पीछे का एनजी फुटेज से इधर उधर से निकाल के ही कंपोज द सीन. एंड आई थॉट कि सीन, मैं रात भर परेशान था कि सीन मैंने शूट ही गलत किया है, तो सीन कभी कंपोज हो ही नहीं सकता. एंड ही डिड समथिंग, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी हैप्पीली कि क्षितिज देख मैंने बना दिया तेरा सीन. मैंने कहा अरे यार ये पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल चीज थी वो. And they would just figure out methods of doing things कि मतलब ये फुटेज, ये सीन कैसे बना दे. क्योंकि कई डायरेक्टर्स होते हैं, एक लॉन्ग टेक लिया, उसके बाद चलो ओके करके आगे बढ़ गए. नो क्लोज, नथिंग एल्स, बट एडिटर्स पोस्ट में फिर कुछ ना कुछ करते हैं, जूम किया, ये किया. ये तो बहुत माइनर सी चीज बता रहा हूँ आपको, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं. सिर्फ सीन एक्सचेंज कर देने से, छोटे छोटे कट मार देने से, वो कुशलेप्स मेथड से ना, बिल्कुल कैसे इंटरचेंज की सारी चीजें. तो आई थिंक एडिटर्स डू ग्रेट थिंग, बट ये उसी को पता चलेगा जो एडिटर के पीछे बैठ के देख रहा है उसके प्रोसेस. बिल्कुल 100%. और किसी को पता नहीं चल सकता. ये साउंड डिजाइन, सेम गोस फॉर साउंड डिजाइन. चलिए, आपसे बात करके अंतरा जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली, एंड आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. एंड जो भी आप करें, आप डायरेक्टर बने, आप कुछ और करें या फिर आप एडिटर बने, मैं मुंबई आता हूँ, आपसे जरूर मिलता हूँ. बिल्कुल. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. Very nice talking to you too. Thank you.